Back on the right stand with, ladies and gentlemen, what is something which will be landmark and historical for us. The excitement is building among the sports fraternity and enthusiasts in Bharat as Mumbai prepares to host the 141st session of the International Olympic Committee from the 15th of October till the 17th. The inaugural ceremony will be on the 14th of October. This is 40 years after this event was hosted in Delhi back in 1983. And let me tell you, during the 139th session in February 2021, it was a team led by IOC member Mrs. Neeta Ambani, Sports Minister now Anurag Thakur and Mr. Narendra Batra that made a very, very strong pitch for Mumbai to be the host for this session. And it met with nearly 99% ayes or approvals for this to happen. This annual gathering of the IOC members holds the key to crucial decisions regarding the future of international sporting events, the venues, changes within the Olympic Charter, and of course, how to further the Olympic movement across the world. The International Olympic Committee's return to Bharat actually paves the way for our bid, not just to host the Olympics, but also for this crucial decision to be taken where the cricket will feature in the Olympics after 128 years in Las Vegas in 2028. Mrs. Neeta Mukesh Ambani has been at the forefront of championing our potential in building Bharat as a sports powerhouse and shining the spotlight on our nation. Elected to the IOC back in 2016, she is the first Indian woman to become a member of the IOC and has since demonstrated deep and unwavering commitment to strengthening India's contribution to the Olympic movement. She is part of 3 important commissions, including the running of the Olympic Channel and also the one that the committee that manages culture and heritage, among the other ones. And she's been really at the forefront of championing Bharat's cause. We'll have a very, very special panel of achievers across the board and also those who are part of this entire Olympic movement. First up, Adille Sumariwalla, AFI President and World Athletics, and Gaurav Kalra, Sports Analyst. Namaste, gentlemen. This weekend should bring us happy tidings, but Mr. Sumariwalla, let me also congratulate you and also our team of athletes for some phenomenal performance at the track and field at the Asian Games. And that only augurs well for us as we tell the world that Bharat is ready. Thank you very much. Appreciate that. And we are ready. How do you see our quest to host the Olympics? And do you believe this is the right time? The effort that's gone in to not just host the IOC session, but also tell the world that they should look towards India? Mr. Sumariwalla? I think we are right there. I would have been happier if it was even 4 years earlier in 32, but that's already given out. India is a new India. We are absolutely on the verge of becoming a sporting powerhouse, and this is absolutely the right time to get the games. We have enough time to prepare. We have enough time to get our athletes ready, to get the infrastructure ready. So we are absolutely ready and raring to bid for the games. Mrs. Neeta Ambani, not just part of the Reliance Foundation, a very strong voice within the corporate India, but also now part of the International Olympic Committee. Does this also bring about a departure, Mr. Sumariwalla, that there is a corporate voice that is pushing a nation's cause and also championing the Olympic movement? No, absolutely. I think you need all sorts of people. You need sports persons, you need corporate support, you need government support. And then when all of this comes together, that is what is a winning combination. And if you see our results at the Asian Games, it's absolutely because the government support to the federations, the government support to the athletes. We created an ecosystem. I'm part of the Mission Olympic cell set up by the government of India, where we were looking at all the athletes, monitoring their performances, make sure that they got everything they needed, supported the federations when they asked for coaches, when they asked for athletes to go abroad for training, bring in sports sciences. So this is the winning combination when we all come together to make it Team India, and that is what we did at the Asian Games. And everybody saw the results. And
It was just that I think we could have got at least 20 more medals, but that's another story for another day. Well, 20 more medals will also come. 100 was looked far and beyond, but 100 par kar liye. 107 medals have come, and one of the golden boys and somebody who's championed Bharat's cause in track and field is with us live. Neeraj Chopra, namaste. आपको फिर से बहुत-बहुत मुबारकबाद. नमस्ते जी, थैंक यू. कैसे हैं? नमस्ते सर, कैसे हो? मैं तो बहुत ठीक हूँ. आपको देखकर और खुश हो गया. सबसे बड़ी बात थी कि ओलंपिक्स भारत में आ सकता है. आदिल सुमारीवाला, गौरव कालरा हमारे साथ हैं. नीरज, आप एक बात बताइए कि ओलंपिक्स भारत में खेला जाए, 2036 की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं. आपको लगता है ये हो सकता है? बिल्कुल जी, कुछ भी पॉसिबल है. जिस हिसाब से हमारा इंडिया का सब कुछ बदल रहा है स्पोर्ट्स में, और जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट पुश कर रही है, फेडरेशंस, और जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर पुश कर रहे हैं, और जब भी हम कहीं खेलने जाते हैं, ना केवल एथलेटिक्स, जो भी सभी एथलीट्स से बात होती है, खेलते हैं, तो एक वो एथलीट्स की पहचान बन चुकी है वर्ल्ड क्लास की. तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है. और हमने ऑलरेडी इतने अच्छे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए हैं, तो बिल्कुल ओलंपिक्स भी बिल्कुल पॉसिबल है. और मेरा एक ये ड्रीम है कि मैं इंडिया में जरूर देखना चाहूंगा ओलंपिक्स होते हुए. अभी ये मुंबई में शुरू होने वाला है ओलंपिक्स का. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग है. नीता अंबानी जी भारत की तरफ से 2016 से हमारी मेंबर हैं IOC में. आपको क्या लगता है कि जो कॉर्पोरेट पुश है उसकी वजह से हम एक अच्छी दावेदारी भी रख सकते हैं, क्योंकि सरकार के साथ साथ अब कॉर्पोरेट पुश भी है और एक हमने भूमिका भी बनाई है? बिल्कुल जी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि गवर्नमेंट तो कर रही है, कॉर्पोरेट भी बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं. और जिस तरीके से वो न केवल ओलंपिक्स के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो अलग अलग स्पोर्ट्स में धीरे धीरे उभर रहे हैं, या धीरे धीरे कुछ सेंटर्स बना रहे हैं और एथलीट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भी बहुत सराहनीय कदम है. और जिस तरीके से फेडरेशंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये शुरुआत हुई है बहुत ही अच्छी है. बिल्कुल इसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2036 के लिए हमारे पास काफी टाइम है. और बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक्स में शामिल हैं, पर एक स्पोर्ट है जो अभी तक दावेदारी कर रहा है, मौका नहीं मिला है. आपको लगता है क्रिकेट को शुमार कर लेना चाहिए 2028 के लिए, नीरज? जी बिल्कुल, काफी पुश कर रहे हैं. और एज ए इंडियन मेरा मतलब मुझे यही लगता है कि क्रिकेट, जिस तरीके से हमारी टीम है और जिस तरीके से कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम्स में क्रिकेट हुआ है, और हमारे लोगों ने सपोर्ट किया और सभी एथलीट्स मिलजुल के वहां पे रहे, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक कदम होगा. सभी स्पोर्ट्स को एक तरीके से, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं कि हमेशा क्रिकेट को लोग देखते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, तो ओलंपिक्स में आने से है कि हाँ. और एक बात और होती है कि लोग बोलते हैं कि क्रिकेट को बस इतनी कंट्रीज खेलती हैं, तो सबसे पहली बात तो कि वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिला है क्रिकेट को. दूसरी बात है कि जो ये बात है कि सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, तो जब क्रिकेट ओलंपिक्स में जाएगा और बाकी स्पोर्ट्स भी होंगे, तो सभी को इक्वल सपोर्ट मिलेगा. और सबसे अच्छा चेंज ही होगी, सभी स्पोर्ट्स इक्वल चले, सभी एथलीट जो मेहनत करते हैं अपनी कंट्री के लिए, जीतते हैं, तो उन सभी को इक्वल तरीके का एक रिस्पेक्ट और दर्जा मिलना चाहिए. लोगों का कहना है 2 गोल्ड फिर पक्के हो जाएंगे, एक जैवलिन में और एक क्रिकेट में. सर मैं जैसे हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ कि मेहनत सभी करके आते हैं. इस दुनिया में एक से एक एथलीट है जो मेहनत करते हैं, लेकिन हमेशा वो दिन डिसाइड करता है कि क्या होता है. हमारा बस काम होता है कि अपना उस दिन 100% दें, और बाकी ऊपर वाले का साथ रहता है, सभी की प्रे होती हैं, और उस दिन ही रिजल्ट तय होता है क्या क्या रहता है. बिल्कुल. और अब तो ऐसा लग रहा है कि 1, 2, 3 भी जैवलिन में भारत से ही होगा. अभी कंपटीशन घर पे ही है. एशियन गेम्स में भी हमने देखा कांटे की टक्कर आपके 2 भारतीयों के बीच में हो रही थी. नहीं सर, बहुत अच्छा था जिस तरीके से किशोर ने थ्रो लगाया. बिल्कुल मैं चाहता था कि किशोर का भी एक ड्रीम था कि ओलंपिक क्वालिफाई करे, लेकिन जिस तरीके का किशोर ने थ्रो किया और 2 पर्सनल बेस्ट किए, 87 मीटर का थ्रो किया, तो मतलब अमेजिंग था. और ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से ना केवल किशोर, जैसे वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी मनु डीपी ने बहुत अच्छे थ्रो किए थे, रोहित ने इस साल 83, मतलब हमारे पास काफी अच्छे जेवलिन थ्रोअर्स, ना केवल जेवलिन थ्रोअर्स, बाकी एथलेटिक्स इवेंट्स में जिस तरीके से एथलीट उभर के आ रहे हैं और वर्ल्ड क्लास की परफॉर्मेंस दे रहे हैं. और वही हम हमेशा बात करते हैं आदित्य सर के साथ और बनोट सर के साथ भी बात हुई थी कि आगे के लिए जो
सबसे मेन फोकस रहेगा कि इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया में हो तो और ज्यादा मजा आएगा, ताकि अपने लोग भी देख पाए कि हमारे एथलीट्स में कितनी कैपेबिलिटी है। जी नीरज, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं गौरव के पास जाऊं उससे पहले आदिल सुमारीवाला जी से मैं पूछना चाहूंगा कि 8-10 साल 8-10 years आदिल जी that this mehnat has happened. I remember back in 2012 around London Olympics and also before that Commonwealth Games, one would rue the fact that track and field is not getting the focus. Middle distance, our shot putters, javelin throwers should get more opportunity. So a decade later, we've grown leaps and bounds, isn't it? I remember having that conversation with you, Adil ji. That's why I'm asking you. Yeah. So you know what happened was I took over as presidency in 2012, and we all sat down. It was absolutely teamwork with the coaches, athletes, foreign experts, etc. And we drew out a blueprint. And it was a three Olympic cycle blueprint where we identified certain events. And I must honestly tell you that when javelin was identified as an event, I was thinking twice, and I was questioning people who said that javelin could become an event for India, and I said, but we don't have the big boys, we don't have the 6'3" and the broad shoulders, and they came back to me saying we don't need that. It's a technical event. If you can do your technique right, and if you can have speed, and Neeraj has proved he's got both. He's got the technique and the speed. His coach today is a biomechanics expert. So what we did is we identified events, whether it was long jump, triple jump, Sri Shankar, Chitravel, whether it was middle and long distance running. We had 3 foreign coaches. Presently, Scott Simmons is the coach of Parul, Neeraj, etc. We've sent them for training abroad. So we did a lot of work, and it took us 3 cycles. And I'll give you a quick this thing. 2012, we had 12 athletes who qualified for London Olympics. Rio, we had double the number. In Tokyo, we have triple the number, and that shows the progress, that shows the bench strength, and that shows us that we are probably on the right track. We had a lot of failures, I must say, but we have the highest number of medals ever in the Asian Games. Last Commonwealth Games, we had the highest number of medals in the last Commonwealth Games. The Asian Athletic Championships, we had the highest number of medals. At the Asian Athletics Championships, we have a gold through Neeraj at the Olympics, and we hope that this trend will continue. True, and if that trend continues, that makes for a very strong case, Gaurav Kalra, for us. Yes, and Anand, I think it's important to reiterate why the session that's starting in a couple of days is extremely important, because it engages India at a much deeper level with the Olympic movement than it has in the past. Now, the previous session was 40 years ago. I think Adil was an early in his sprinting career at that time, and since then, I think India's been a marginal Olympic nation. Let's be honest and admit that. But subsequently, and it's just such an honor to be, on the same screen as Neeraj Chopra, because it is men like him, athletes such as him, and of course Abhinav Bindra before that, who've by sheer dint of their skill and the support that they've had, that Adil was referring to, have made that leap into world-class performers. But that consistency is now going to result in many, many more athletes coming through, and I think that journey India is very much on the path of. So the Olympic session, which is a re-engagement with the Olympic movement, actually sends that message into the world that this is a significant pit stop, but a very important moment from where the takeoff can happen. And see, Anand, the great cities in the world have hosted the Olympics in the past. You look back on London, LA, which has held it in the past, Tokyo previously, and now we are headed to a situation where an Indian city will host the Olympic Games, which is really the most significant sporting event in the world. Yes, there is the Football World Cup and all of that, but there is nothing that matches the aura of the Olympics, and I think this session
that is bringing the Olympic movement to India in the next couple of days is going to be the kickstart for many great things. And I hope that in 2036 we're going to see Neeraj Chopra lift his 4th consecutive gold medal at the Olympic Games. No, we should, and we should have Kishore Jena. I think I just saw him there and we just lost Kishore Jena. We'll try and get him back with us. But you know, Gaurav, there are both the people who are right now with us. I'm very proud to share the screen with them, you know, aside of you and me. Because Adille Sumariwalla ran when nobody else was looking and nobody was running at that time. And Neeraj Chopra is throwing the javelin and inspiring so many others to take the track and field. So they both have done inspiring, phenomenal work, and they continue to do that off the track and on the tracks, and that's what's so inspiring. But there is another person who I'm very inspired by, who's joining us now on a quick question with her. Anju Bobby George, Senior VP AFI, is with us. She's in Mumbai at this point, and perhaps will be part of these conversations of the IOC session. My first question to you, Anjuji, thank you very much for joining us. Is India ready to host the Olympics sometime in the future? 2036 Ahmedabad. Why not? So India is going to be a superpower, as we all know, and see the way how we are connected with other countries politically and financially also. I can say that we are stable. Even during Corona, I think one of the best countries who managed well was India. So why not? It's a possibility, and we can try for it. And I think the recent happenings, everything is positive for India. And most of the other countries are, because of financial problems, they are backing up from major championships. But I don't think, and I don't feel that India will be like, in my opinion, we are all set for that. But when that's the question. हाँ, 13 साल रुकना पड़ेगा, पर नीरज आपको कुछ लगता है कुछ हमें और करने की जरूरत है जब हम दावेदारी ठोक? किशोर जेना हमारे साथ हैं, किशोर जेना से भी मैं पूछ लेता हूँ. किशोर जेना, अभी मैं बात कर रहा था नीरज चोपड़ा से भी, मैंने कहा कि जैवलिन में लग रहा है 1, 2, 3 अब हम ही लेके जाने वाले हैं, सब हमारी तरफ ही आने वाला है, आप लोग आपस में कम्पीट कर रहे हैं. कंग्रेचुलेशंस ऑन द सिल्वर मेडल. बट भारत में ओलंपिक्स, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हो रहा है 15 से 17 के बीच में. भारत दावेदारी कर रहा है कि वी वांट टू होस्ट द ओलंपिक्स सम टाइम इन 2036, परहैप्स उसकी दावेदारी कर रहे हैं. योर थॉट्स, किशोर? नमस्ते सर. नमस्ते सभी को नमस्ते सर. आप तो देखे इंडिया अभी स्पोर्ट्स में कितना आगे जा चुका है और भी आगे करेगा, क्योंकि AFI, साई एंड स्पॉन्सर सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी और अच्छा करेंगे आगे, क्योंकि हमको भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है AFI से, तो और भी अच्छा करेंगे हम भी. नीता अंबानी जी रिलायंस फाउंडेशन से जुड़ी है, IOC की मेंबर है. रिलायंस फाउंडेशन के एथलीट्स जो हैं उन्होंने 11% जो 13% मेडल्स में जीते भी हैं. ये कॉर्पोरेट सपोर्ट कितने मायने रखता है किशोर जी? आप एक बात बताइए. चाहे कोई भी सपोर्ट करे, चाहे रिलायंस फाउंडेशन हो या JSW हो या जो भी हो, OGQ हो, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, इससे कितना फर्क पड़ता है? सर फर्क पड़ता है बहुत सारा, क्योंकि जैसे मिडिल क्लास फैमिली से फिर कुछ स्पोर्ट्स में करना होता है तो उसका पीछे तो काफ़ी लगता है, पैसे भी, फाइनेंशियली भी लगता है. तो ये सारा चीज़ जो ये लोग से रिलायंस फाउंडेशन से करते हैं, ये थोड़ा हमारा टेंशन कम हो जाता है इसमें, तो हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं गेम में. ये चीज़ थोड़ा अच्छा लगता है. सरकार की तरफ से टॉप स्कीम आता है नीरज, कॉर्पोरेट्स की तरफ से हेल्प आता है, आर्मी भी आपको बैक करती है, फौज भी बैक करती है, ये आपका टेंशन कम करता है जैसे किशोर कह रहे हैं? बिल्कुल जी, जैसा कि बिल्कुल किशोर ने बताया, जो खिलाड़ी है ज़्यादातर अपने यहाँ से तो वो बिल्कुल नॉर्मल क्लास और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है, वहाँ भी देखना है और अपना स्पोर्ट्स भी करना है. तो बिल्कुल जो स्पॉन्सर्स होते हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रहा है, फेडरेशन सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा पूरा फोकस अभी स्पोर्ट्स की तरफ है. तो पहले काफी दिक्कत आती है एथलीट्स को, लेकिन जिस तरीके से अभी हर चीज बदल रही है,
और आप रिजल्ट्स भी देख सकते हैं किस तरीके से केयरलेस एथलीट वहां पे परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा अभी अपना जो स्पोर्ट्स है वो बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है और रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, तो वो तो सभी को पता है। IOC की member रही हैं अंजू बाबू जॉर्ज. I just want to quickly ask you, Neeta Ambani ji has been a member of the IOC since 2016. She's done some phenomenal work, not just to champion the Olympic movement across the world and also in Bharat, but also push for India's position. In my opinion, in my understanding, she is doing really well, and she is one of the main face in IOC. And see now, the summit is happening in Mumbai. It's already started. 14th is inauguration, but dignitaries are already here. Yes. And as a business family, for them it's very easy because normally the country will do, but here the Reliance actually they came forward and they are doing it, and in such a big way, such a wonderful way. And our Prime Minister is going to inaugurate that on 5th, 14th. So I guess the way how they are supporting sports, the infrastructure and the academy also, Reliance Foundation is also doing really well. They are supporting athletes and their branch is actually in our academy also. Athletes are training in my academy also. So in that sense, they are doing really a lot of work for sports and a lot of support for sports. देखिए 2036 किशोर तो हम बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे क्योंकि अभी तो फैसला नहीं होगा, लेकिन 2028 में आपको लगता है क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल कर लेना चाहिए? देखिए सब लोग कहते हैं, लोग क्रिकेट की बात करते हैं, दूसरे स्पोर्ट की बात नहीं करते, लेकिन ओलंपिक्स में देखा जाए तो बाकी सब स्पोर्ट्स हैं लेकिन क्रिकेट नहीं है। नहीं सर, हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए और खिलाड़ी तो हमारे लिए सारे सेम ही है। तो इंडिया गवर्नमेंट को जैसे लगता है अच्छा करना चाहिए खिलाड़ी के लिए, तो वो अच्छा ही करेंगे सर। हम इसमें तो अच्छा ही करेंगे। अगर खेलते हैं तो अच्छा करेंगे, उनकी व्यूअरशिप भी आएगी ओलंपिक्स के अंदर। और मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले नीरज को कह रहा था कि 2 गोल्ड पक्के हो जाते हैं, एक क्रिकेट में और दूसरा फिर जैवलिन में। वो भले ही आप और भी आ सकता है और भी तो आएंगे। आदिल जी wanted to say something. Yes, Adil ji. No, what I wanted to say was something very simple. Ji. Yes, cricket should absolutely be included, but look at the winds of change. Today cricketers are lining up to take pictures with Neeraj. Exactly. Something like this never happened in the past. So that's the wind of change, and that's the new India we are talking about. करेक्ट। किसी दिन कुछ क्रिकेटर्स से किशोर आपको भाला फेंकवाना चाहिए, यानी कि आप मैं बस आपसे और नीरज से ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी क्रिकेटर, अगर मैं आपको चॉइस दूं कि किसी से आप कहें कि आओ भाई ये भाला उठाओ और मेरी तरफ फेंक के दिखाओ, तो आप किसको कहना चाहोगे किशोर? नहीं सर, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ कभी। अच्छा, आप क्रिकेट देखते ही नहीं है? अरे वाह। तो आप कौन सा स्पोर्ट फॉलो करते हैं? वॉलीबॉल। वेरी गुड। किशोर जेना जेवलिन से पहले वॉलीबॉल ही खेलता बड़ा अच्छा, तो इसलिए वॉलीबॉल का बड़ा मैं स्कूल और कॉलेज में वॉलीबॉल खेलता था, उसके बाद छूट गया, थोड़ा लंबा उसी की वजह से हूँ। अच्छा, बट नीरज मैं आपसे पूछूं तो आप तो बहुत सारे क्रिकेटर्स से मिले होंगे, किसी ने पूछा है कि भाई ये जेवलिन मुझे फेंकना सिखाओ? काफी मुझे ही बोलते हैं कि बॉलिंग करो नीरज, आपके फास्ट आर्म है, लेकिन हमारी टेक्निक बिल्कुल अलग होती है। बट मैं किसी फास्ट बॉलर को ही चुनूंगा क्योंकि उनको थोड़ा पता होता है फेंकने का भी कि किस तरीके से बॉल फेंकना है। तो बिल्कुल जसप्रीत बुमराह, या फिर अगर बैट्समैन की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी या विराट भाई को चुनेंगे कि आओ जी एक बार ट्राई करो। हाँ, विराट भाई से या महेंद्र सिंह धोनी से कहेंगे कि आओ जी एक बार ट्राई करो। चलिए ये बात भी उनकी तरफ पहुंचा देते हैं। लेट्स जस्ट क्विकली वांट टू आस्क अंजू बॉबी जॉर्ज, क्रिकेट and some of the other sports are under consideration for Las Vegas 2028. Do you think we'll be able to convince the IOC to think about cricket for 2028? Yeah, definitely cricket is going to be in, but only my worry is that whether our main team will go for that. Because in Asian Games also, though we got the goal, both the teams actually main players were away. But still, if we can win a goal, then it's fine. Otherwise, in Olympics, I think that won't be the story. We need to pitch our best athletes because
the medal actually for every country is very precious, and they will come for that and they will deliver their best. So we also need to put our best in for that. So if cricket is there, I think one gold we can at least expect. Not one. Now we've got javelin also, so we'll have 2 gold. But Gaurav Kalra, will Bharat field its best team if cricket is included? And somewhere Mrs. Neeta Mani can have a very strong voice in making sure that happens. I think that India will want to field its best team. I think obviously the Asian Games this time around meant that because it was so close to the World Cup, there was they were needing to have to make that choice. But for instance, at the Commonwealth Games last time around, when only women's cricket was part of the program, the full strength Indian team played, reached the final, lost to England unfortunately. But the Olympics is the pinnacle of sport. There is no question that even, for instance, if you look down the track, 2028 is about what, 5 years away. Virat Kohli will be about 39 years old. It might be the last feather in his cap that he's looking for. An Olympic medal. I mean, to be in among the elite of world sport, not so much just of his sport, which, let's be honest, is a tiny sport played by a few countries to a very high level of skill, as opposed to what Neeraj and Kishore do. But I think what's important to remember, Anand, and I think it's important to sort of circle back to this, is that the baseline is getting stronger and stronger and stronger. I continue to see videos that I think Kishore and Neeraj see this every day, that there are young kids now throwing the javelin to very impressive distances, and we are seeing 14, 15-year-olds, age group competitions, well managed, well organized, and I think that corporate structure as well as the government support is making that baseline very strong, which means that you can have a competition at the Asian Games where the Olympic champion, that is Neeraj Chopra, is really challenged by a countryman. And then they get into this duel, which Neeraj then wins, which is such an exhilarating moment for Indian sports. So I think we are greedy. Sporting powerhouse is a... Absolutely. I've run out of time. I've run out of time. Expression, but I think, Anand, I think what's happened is with Khelo India, that there is a movement that started at the grassroots and which needs to continue. To all my panelists, thank you so much. Such a pleasure to speak with all of you, and fingers crossed on good tidings for us post the 17th. Not just for cricket, but more importantly for Bharat hosting the Olympics. Some talk there on that front. Winding up this edition of The Right Stand on that note, brass tacks with Zak.